Good morning, friends. Very good morning and welcome. So, in the last session, I did got certain, request from some of you that, sir, regarding what you call El Nino. We need to have certain things on El Nino, La Nina, El Nino, and the related things. Something you have just given. As well as Indian Ocean Dipole, we have some of you didn't able to got that thing, so I'll discuss about that first. What is an El Nino? First, let us see. My friends, if you remember, in the ocean current class, I did discussed that in the South American coast, normally we have Humboldt or Peruvian current, right? This Humboldt or Peru current is responsible for this Humboldt current or Peru current, which is responsible for what? Humboldt or the Peru current is responsible for development of high pressure in the Peru coast, South American coast. Okay, South American coast. So I said at that time, if this is South America here, it is South America here. This side here is Australia, and here you have your Indonesian part, and you have here this side is India is here, this side India. Okay. So whenever this is a high pressure here and this side low pressure condition, usually wind blows in this way, with which there is enough supply of moisture here. ये region में enough supply of moisture you are having, enough supply of moisture to this region, right? So what happens whenever the wind blows in this way and became the southwest monsoon for India, इंडिया के लिए यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून बनता है, here you have the Indian subcontinent part, right? So in this case, all the wind which is coming this way from this side, they have enough moisture and they move in this way, forming the southwest monsoon. तो स्ट्रॉन्गर मानसून होता है जब ये इंटेंसिफिकेशन होता है और इससे भी ज्यादा लो प्रेशर इधर होता है, आपको पता है ये मॉइस्चर इज देयर. Okay, so here it is like it goes in this way and it on, but ये है आपका नॉर्मल कंडीशन. एंड आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, मैंने ये भी बताया था यहां पे क्या होता है, दिस साइड यू हैव मोर कन्वेक्शन एंड इंस्टेबिलिटी यहां पे, एंड दिस इज लाइक ए साइकिल लाइक दिस इट मूव. ये जो एयर मूव कर रहा है यहाँ पे मॉइस्चर सप्लाई करने में भी यहाँ इजी हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लो प्रेशर होगा, देन इट विल गो लाइक दिस. बट इन केस ऑफ दिस वन हियर, if it is an El Nino period, El Nino का मतलब क्या है, here is warming up of this coast takes place, ये वार्म बन जाएगा, this coast will have warming up of this coast, Peruvian coast become warm. जब यहाँ पे warming up takes place, it became low pressure, तो इधर से the wind will come in this way, instead of going there, surface wind इधर आएगा, and there is no moisture, sufficient moisture. This position is called as El Nino. कल मैं बोला था सदर्न ऑसिलेशन जो बात किया, that is what, यानी कि ये इट इज ए नॉर्मल पीरियड, दिस इज इन द नॉर्मल पीरियड. सो नॉर्मल पीरियड में मैंने कहा इन दिस केस
the monsoon will be normal because of what? This case of normal conditions. But sometimes ये जो आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट है, in the South American coast we have the development of warm current in that region, warming effect here because of the counter equatorial current. This is known as the El Nino phenomena. एल नीनो फेनोमेना में यहाँ पे ये वार्म हो जाएगा, यहाँ पे ये कूल हो जाएगा. सो हियर यू हैव कंपैरेटिवली, हियर यू हैव लो प्रेशर, हियर यू हैव हाई प्रेशर. सो द सरफेस विंड जो है ना, इधर से इधर ये चलेंगे. सो दे विल नॉट सप्लाई, दीज आर कूल है, तो ड्राई विंड होगा. ड्राई विंड विथ नो सच एनी एनफ मॉइस्चर इवन. This dry wind, while it is like in this area, जैसे मैंने कहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन्स को जो जाएगा, this part, so this wind while it blows, it will be very weak easterlies. Easterlies will be weak. So यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून होगा, ये हो गया वीक साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज ये ईस्टर्ली ही वीक होंगे और वीक साउथ वेस्ट मानसून यहां पे होगा बिकॉज दे आर नो सप्लाई ऑफ मॉइस्चर हियर. यहां पे ये भी वीक हो जाएंगे यहां पे बिकॉज इट इज देयर इज नो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड दिस बिकम वीक. सो द मानसून बिकम वीक हियर. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, बिकॉज ऑफ वीक मानसून इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मानसून फेलियर होगा, डिले हो सकता है मानसून, मानसून वीक हो सकते हैं, वीक मानसून. Okay, weak monsoon here, right? आपको एलिनो के टाइम पे मानसून का डिले होगा, मानसून विल बी ए मानसून फेलियर होता है. ठीक है, दिस टू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू से. सो आई विल डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, वी विल सी दैट. आपका एक क्वेश्चन है, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट दिस, दैट एल नीनो ला नीना हैव यू गॉट, व्हाट इज दैट, और डू यू वांट मोर? मुझे बताओ पहले एल नीनो क्या है. एल नीनो यू गॉट इट, ला नीना आई हैवंट सेड, एल नीनो ओनली. हैव यू गॉट दिस? सो मैंने कहा कि एल नीनो इज ए एबनॉर्मल फेनोमेना. मैंने अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, एल नीनो इज ए एबनॉर्मल फेनोमेना ड्यूरिंग व्हिच द वार्मिंग अप ऑफ द पेरुवियन कोस्ट टेक्स प्लेस and low pressure cell develop here. El Nino is a abnormal phenomena during which warming up of the Peruvian coast takes place and low pressure develops here. आपने मैं जो मटेरियल बोला था पढ़ा कि नहीं, पहले ये तो बताओ. पढ़ा है ना, तो पूरा क्लियर होगा. नाउ सेकेंड पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द एल नीनो द सरफेस wind of Pacific Ocean blows from, surface wind of Pacific Ocean blows from Australia towards South America. From Australia towards South America. Okay, right? And there is comparatively high pressure condition in these regions which has dry air, cool and dry air in Australia. This system weakens the ईस्टर्लीज, कंपैरेटिवली वीक ईस्टर्ली होगा, लेस मॉइस्चर होंगे वहां पे. एंड दिस ईस्टर्लीज व्हाइल इट मूव टुवर्ड्स इंडिया, दे डोंट हैव मच मॉइस्चर एज इट शुड बी एंड इट विल हैव लाइक सब्सिक्वेंटली लेस रेनफॉल और डिले इन द रेनफॉल. यहां पे ये इधर मॉडिफाई होता है तो डिले हो जाते हैं. दैट इज द एल नीनो इफेक्ट. ओके, नाउ my friend somebody is asking, sir El Nino Moduki क्या है? Modified El Nino is Moduki.
ये जो लो प्रेशर यहां हुआ, दिस लो प्रेशर समटाइम्स डेवलप हियर, यहां पे होगा, हियर यू विल हैव मूवमेंट ऑफ दिस इज एल नीनो मोडुकी, एल नीनो मोडुकी। सो एल नीनो मोडुकी में क्या होता है देखिए, ये आपकी साउथ अमेरिका, हियर इट इज ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा था कि यहां पे वार्मिंग अप होता, मगर ये यहां पे अगर वार्मिंग हुआ और हियर देयर इज अपवर्ड मूवमेंट, here you have high pressure comparatively and flow. This is modified El Nino Moduki. This is an abnormality we found nowadays. यहाँ पे देखो, here the warming up of is here in this case. यहाँ पे I mean in the El Nino Moduki case you have the same, maybe this cold oceanic current, what is the Humboldt current is there but not very strong, but Humboldt current will be there Moduki के टाइम पे. But very interesting we found it is developed generally at the middle part में develop होता है, एल नीनो मॉडिफाई होता है, नोन एज एल नीनो मॉडिफाई। मोडुकी का मतलब मॉडिफाइड एल नीनो। I didn't say that warming up of northwestern part of Australia is El Nino. No. I said that is Indian Ocean dipole बोला था। स्लाइड याद है आपको? I'll show you the slide. डाइपोल का टाइम बताया था मैं। अच्छा, उसी टाइम पे जो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया, एल नीनो एबनॉर्मल वार्मिंग अप ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेक्स प्लेस व्हिच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिवली लो प्रेशर कंडीशन। अच्छा, ड्यूरिंग ना डाइपोल है ये, एल नीनो कह दिया डाइपोल होगा वो। लेट मी नाउ स्पेसिफाई दिस। कल का क्लास का कुछ बता रहे हैं आप लोग, जस्ट सी दस, जस्ट वेट। I'll go again to that particular slide. एक मिनट रुक जाइए। यहां पे ये समझ में आया क्या? मॉडिफाइड एल नीनो, आदित्य एल नीनो यू गॉट इट फर्स्ट। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ एल नीनो? प्लीज रेस्पॉन्ड। एल नीनो इज क्लियर टू यू और एनीवन नीड मोर थिंग्स? बस आई जस्ट वांट द मीनिंग ऑफ एल नीनो, नहीं तो पूरा और एक बार करवाऊंगा, बता रहा हूं। ये कंफ्यूजन है यहां पे आपका एल नीनो का। डन, ठीक है। सो एल नीनो यू गॉट इट, एल नीनो मोडुकी ऑल्सो यू गॉट इट। मॉडिफाइड एल नीनो है ये दोनों। फॉरगॉट अबाउट कल जो बोला था, छोड़िए, अभी हम देखते हैं। अगेन आई विल डू दिस। सो ड्यूरिंग एन एल नीनो और एल नीनो मोडुकी व्हाट विल हैपन? वार्मिंग ऑफ दिस साइड, सप्लाई ऑफ दिस विल बी लेस, है ना। मैंने आपको कहा था जो कल, एक चीज और देखिए, वहां पे वार्मिंग अप ऑफ विच रीजन्स विल बी देयर, वो इंडियन ओशन डाइपोल का बात है। वॉट एवर यू आर सेइंग इंडियन ओशन डाइपोल, आई विल कम टू दैट वन। वो एल नीनो के साथ सभी टाइम संपर्क नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लुक एट हियर, दिस इज एल नीनो। ड्यूरिंग एन एल नीनो मॉनसून विल बी वीक। बस अब एक चीज देखते हैं हम, देयर इज अनदर कंसेप्ट विच यू फाउंड ड्यूरिंग द एल नीनो, मतलब एल नीनो के टाइम पे यहां पे बारिश नहीं होना चाहिए। अगर बारिश होगा भी, इफ रेनफॉल इज देयर ऑल्सो इट शुड हैव वेरी लो रेनफॉल। जस्ट वेट, okay. So again I am saying
This is here is the case of your monsoon. Monsoon is influencing the which one? Monsoon is influencing the Indian. Monsoon is influenced by the El Nino. Fine, but sometimes कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मानसून का इतना इम्पैक्ट नहीं है एल नीनो के ऊपर। तो बताया गया क्यों नहीं है। देन वी गोट टू नो इंडियन ओशियन में कुछ हो रहा है। तो व्हाट इज दैट इन इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन में व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग्स which leads to the even in the El Nino period monsoon is proper। 1982-87 2-3 बार ऐसे हुआ है जब मानसून और एल नीनो के टाइम पे मानसून ठीक हुआ है। तो देन वी गॉट टू नो देयर इज सम अदर थिंग्स ऑल्सो। देखिए आप, ये आई थिंक क्लियर नहीं होगा आपको। ये मैंने कहा अभी जो बताया था, ये एल नीनो का टाइम, ये नॉर्मल टाइम है ड्यूरिंग विच नॉर्मल टाइम इट इज कोल्ड कंडीशन इन द साउथ अमेरिका, वार्मिंग अप इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऐसे जा रहे हैं। तो ये इक्वेटोरियल विंड गैदर वार्म वाटर एंड पुल टुवर्ड द वेस्ट। ये वार्म वाटर आया तो वार्म वाटर इधर पे जाएगी टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया। बट एल नीनो के टाइम पे देखो द विंड इज ब्लोइंग दिस वे, सो वाटर ऐसे मूव करेगी एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो सप्लाई ऑफ मॉइस्चर टू दिस साइड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन हियर, क्योंकि मॉइस्चर इधर पे आ जाएगी तो यहां पे बारिश नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन एल नीनो केस। एल नीनो केस नाउ अब देखते हैं और एक चीज। लेट अस सी वन मोर थिंग। इन दिस केस आई विल गो फॉर दिस। देखिए मैंने आपको जो बोला था पहले ना, वो क्या था, देखो आप। इन द लास्ट क्लास आई डिड सेड सर्टेन थिंग्स। दिस इज इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव वाला बात होता है। पॉजिटिव वाला में कल का यही था, देखो आप ठीक से देखिए, ये है आपका कूलर देन नॉर्मल। मैं वार्मर नहीं बोला था, कूलर होना चाहिए, ये वार्मर है। ड्यूरिंग द कूलर होता है, कूलर देन नॉर्मल, वार्मर देन दिस। कल जो डायग्राम इसको देख के बनाए थे ना, देखो आप कल का डायग्राम यही है। In the positive Indian Ocean dipole, you just see here, this is Australia. You can see this. This is here is Australia. Okay. This is here is Australia. This side, as we know, यहां पे जो होता है ना, in this particular part we have हाई प्रेशर कंडीशन जनरली हैपेंस। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम पे क्या होते हैं, ये देख रहे हैं आप, दिस इज द रीजन्स ऑफ व्हाट यू कॉल योर इंडोनेशिया एंड ऑल दिस रीजन्स। ये रीजन में कूलर देन नॉर्मल, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर जैसा बन जाता है, और यहाँ पे वार्मर देन, तो यहाँ पे लो प्रेशर जैसा बनता है। एनफ मॉइस्चर विल बी देयर ड्यूरिंग दिस टाइम। यहां पे कन्वेक्शन डिक्रीज होगा, सो बारिश नहीं होता है यहां पे, नो डाउट। बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेन, ये जो लो प्रेशर कंडीशन है ना इंडिया में बहुत इंटेंसिफाइड होता है। ये मॉइस्चर यहां पे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर हियर हैज एयर हैज मॉइस्चर, सो इट विल गोज लाइक दिस। बिकॉज ये वार्मर देन दिस इज वेरी हॉट, ये वार्म है तो ये हॉट होगा, मतलब लो प्रेशर इज इंटेंसिफाइड दिस साइड, सो विंड ब्लोज इन दिस वे and it gives rainfall. Again I am saying, even if during the what you call El Nino period, El Nino period में मैंने कहा था ना यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इस तरफ जो है ना साउथ अमेरिका में लो प्रेशर होता है। एल नीनो पीरियड यू रिमेंबर, ये साउथ अमेरिका है, यहां पे लो प्रेशर है, सो एयर ऐसे जा रहा है। मैं बोला था ड्यूरिंग द एल नीनो पीरियड, ड्यूरिंग एल नीनो पीरियड, रिमेंबर दिस। एल नीनो पीरियड में ऐसे है, यहां पे हाई प्रेशर, एक कूलर होता है। कभी कभी देखा गया है क्या, वी फाउंड वन थिंग,
During the same time, here you have low pressure condition develops. You remember? This is called as positive Indian Ocean dipole. क्या कहते हैं इसको? Positive India. Only in Indian Ocean में राइट हैंड साइड पे हाई प्रेशर, लेफ्ट हैंड साइड पे लो प्रेशर, एंड दिस लीड्स टू मोर एंड मोर वार्मिंग ऑफ यहां पे होगा. ओके, दिस वार्मिंग ऑफ लीड्स टू, जब यहां पे लोअर्स वेरी इंटेंस लो प्रेशर बनता है तो साउथ वेस्ट मानसून यहां से जाएगी. वाइल द साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज इन दिस वे, दो साउथ वेस्ट मानसून जो जाएगी, इट हैज लॉट ऑफ मॉइस्चर, सो गिव रेनफॉल. सो एलिनो के टाइम पे अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो बारिश ठीक ठाक होता है. ओके, is it clear now? Ayush, you said, sir, when you are done explaining Indian monsoon, please explain Atlantic meridional overturning circulation once. Okay, El Nino, La Nina, again repeat. ठीक है, आप एक काम करो, मैं लिख लेता हूं, that will be better. कुछ लोगों को परेशानी अभी भी है लग रहा है, डोंट वरी. आपने पढ़ा नहीं यार, आपको पढ़ लेना चाहिए था ना. आई टोल्ड यू टू स्टडी एंड कम एटलीस्ट. हमारा बुकलेट में आपको बताए थे हम, यू नीड टू सी दिस फ्रॉम द बुकलेट. चलिए कोई बात नहीं. एल नीनो इज एन एबनॉर्मल फेनोमेना, एबनॉर्मल फेनोमेना associated with warming up of the Peru coast of South America by replacing America. Okay, second point. During this period, during this El Nino period, the cold Humboldt current became weak and is replaced by a warm temporary ocean current with strong counter equatorial current. ये तो ठीक है, समझ में आया? यहां तक ठीक है? Note down this point. With a strong counter equatorial current. इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए. आप लोग कैसे पता नहीं पढ़ा होगा, ठीक से देखा नहीं होगा. यू आर रिक्वेस्टेड टू अगेन सी द थिंग्स. बहुत सिंपल है. ये लोगों का दिमाग में जो हो जाता है ना स्टूडेंट का कि ये एलिनो बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट कुछ नहीं है. ओके, ठीक है. सो प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. Due to El Nino phenomena, a strong low pressure condition develops along the Peru coast of South America, and a comparatively high pressure condition develops over
develops over which region? High pressure condition develops over the which region? लो प्रेशर कंडीशन साउथ अमेरिका के इस पे बनेगा, हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप ओवर द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट. ओके, सो द इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज wind or equatorial easterlies, or you can say so the equatorial region करो, equatorial region gets less supply of moisture. क्यों? क्योंकि वहां से जो ईस्टर्लीज विंड निकलती है, that easterly wind will have less moisture, the easterly Australian coast. So the equatorial region gets less supply of moisture in the Indian Ocean, region. ठीक है, so that it will get less supply of moisture in the Indian Ocean region. Okay, it had adverse, fine, due to all these conditions, supply of moisture to southwest monsoon became less, and the southwest monsoon also gets less gradient. Consequently less rainfall and delay in monsoon across the Indian mainland takes place. Okay, moon, have you got it now? Some of you have asked me. Partha, my friends, very easy. Aditya, you got it now? आप इसको देखो, थोड़ा पढ़ो, देखो, सब पता चल जाएगा. ठीक है. सो मानसून, इसी हिसाब से मानसून इज गेटिंग अफेक्टेड. दिस एल निनो इफेक्ट ऐसे होता है, डिले करेगा मानसून को या सप्लाई ऑफ मॉइस्चर कम होगा सीधे. नाउ मोडुकी क्या होता है? मॉडिफाइड एल निनो इज एल निनो मोडुकी. ला नीना क्या होता है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन, और ज्यादा. पेरुवियन कॉलोनी बिकेम वेरी कोल्ड है, तो क्या होगा? ड्राइनेस बढ़ जाएगा, और ज्यादा अटाकामा डेजर्ट में बारिश नहीं होगा. वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो बारिश होगा. एबनॉर्मलिटी जर दिया. क्वेश्चन ने कहा है नॉर्मल एल निनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन व्हेरेज एल निनो मोडुकी फॉर्म्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन. किसने कहा? उल्टा बोल दिया ये. दिस इज नहीं, एल निनो मोडुकी फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक. ठीक है. नॉर्मल एल निनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशियन. नॉर्मल एल निनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स, बट एल निनो मोडुकी रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स इन ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. आप बताइए, यहाँ पे ये है साउथ, ये है हरिकेन्स कहाँ होते हैं? इस रीजन में. यू हैव लाइक in this regions you have like more supply of, अगर वार्मिंग इफेक्ट होगा, हरिकेन कब ज्यादा होगा? अभी मैं बताया था. we have like in these regions you see देखो आप, ड्यूरिंग एन एल निनो पीरियड यहाँ पे वार्मिंग होगा. एल निनो के पीरियड में ज्यादा हरिकेन्स इधर बनेंगे, इधर. ठीक है ना.
वार्म विंटर होगा ना, वार्मर होगा यहाँ पे, वार्मिंग इफेक्ट। हाँ, ये वार्मिंग इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, देख रहे हैं आप ये रीजन्स पे। फॉर दैट रीजन यू विल हैव एल निनो के टाइम पे। यस इट इज, सेकेंड स्टेटमेंट का करेक्ट है ये। क्या लिखा है? नॉर्मल एल निनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश हरिकेन इन द अटलांटिक, diminish in the Atlantic, but El Nino Moduki results in the greater number of hurricanes with greater frequency. Hurricanes with greater frequency. Moduki, no. This is wrong. Okay, both of them, neither one, neither two है, not two. एक क्वेश्चन है, हाउ डू जेट स्ट्रीम ट्रैवलिंग एट द अपर लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर अफेक्ट अस? दे कैन क्रिएट ए वेज between warm and cold air affecting climate on the earth. They can cause erratic and bumpy movement of aeroplanes flying in this moment. Yes, correct it is. Second is correct, first is correct. Wedge between warm and cold air, जब ये जाती है ना वहाँ पे wedge between, above this you will have like that, these are region where you have formation of this. Second correct and statement is correct here. Second statement, it is correct here. We'll have again discuss certain more things, just wait. El Nino. So you want to write El Nino and you got it. इंडियन मानसून का डायरेक्शन में चेंज, आई होप यू गॉट इट नाउ अबाउट दिस। व्हाट इज दिस इंडियन ओशियन डाइपोल? थोड़ा देखते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है। डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल जो होते हैं, दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स। इंडियन ओशियन डाइपोल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। मैंने कहा डाइपोल मीन टू डिफरेंट पोजिशन in the Indian Ocean, both right, that is the eastern part, and left, western part, differences in temperature you are having. Generally क्या होता है, ये जो रीजन्स में आपको पता है यहाँ पे हाई प्रेशर है। इन नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और इस तरफ लो प्रेशर, आपको पता होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हाई प्रेशर है? आई टोल्ड यू अर्लियर देयर इज ए हाई प्रेशर इन दिस रीजन्स। व्हाट इज दैट हाई प्रेशर इन दिस रीजन्स? Here is a high pressure cell, इसको माडागास्कर का मैस्कराइन कहा जाता है ये रीजन्स पे। यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट देयर इज ए सोमाली करंट एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंकिंग ऑफ दिस, हमने जेट स्ट्रीम का बताया था मैं, इफ यू रिमेंबर। बट यहाँ पे वार्मिंग अप होगा, ये वार्मिंग अप होता है इन दिस रीजन्स। सो वार्मिंग अप, दिस इज पॉजिटिव हियर, वार्मिंग अप ऑफ दिस, वार्मिंग also leads to, यहाँ पे एक उल्टा होगा, जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। Here you will have a very interesting thing during this time. If usually what happens, this side you have a low pressure condition and wind may blows. We have seen during the El Nino period, positive Indian Ocean dipole has given rainfall and negative Indian Ocean dipole has given further enunciated or further strengthen the dryness. This is what I want to say. चलिए, ये तो था इसके बारे में थोड़ा बहुत, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू। हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा पढ़ लीजिए। आप पढ़ा कि नहीं आई डोंट नो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अगेन सी अबाउट दिस। आई विल प्रिपेयर वन मोर लाइक यू नो व्हाट यू कॉल विजुअल्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। लेट मी सी इफ इट इज पॉसिबल एंड आई विल अगेन डिस्कस विथ यू। थोड़ा सा इसके साथ कुछ फॉरेस्ट फायर और सबको बनाएंगे आगे। I'll just hold on here for this particular topics of these regions. Okay, आप इंडियन ओशन डाइपोल के लिए प्लीज लीव 1 पेज ब्लैंक फॉर द टाइम बीइंग। 1 पेज छोड़ दो इंडियन ओशन डाइपोल का। We'll have some other things with that. ड्रॉट एंड फ्लड के साथ इंडिया का मैं इसको करवाऊंगा। कुछ है और चीज विच आई वांट टू से,
There are some parameters we need to look at. I just said in general, I said this is the case. मोटे मोटे में यही है, but as you are asking detail चाहिए, तो I just give some time for this. If possible, I'll have like a animation on this one, that will be better in case of El Nino time and La Nina time. La Nina मतलब क्या होता है? A general condition which is again it became more stronger. We'll have these things again. Let me now move on to the monsoon part which I was discussing, because I promised some of you that I will discuss this one, so I did discuss this. We are discussing about, एक पेज छोड़ दो अभी for the time being, on the Indian Ocean Dipole. Leave it. I'll just see that and can give you some latest update on this, something finding some radon content of Indian Ocean. रेडन कंटेंट रिलेटेड थिंग्स कुछ डिस्कस करेंगे, देन विल सी. चलिए अभी हम देखते हैं. आई टोल्ड यू अबाउट द ऑनसेट ऑफ मानसून ओनली, इफ यू रिमेंबर. मैं केवल आपको ऑनसेट ऑफ मानसून बताया था. इन द ऑनसेट ऑफ मानसून आई डिड सेड, डू यू हैव द एटलास विथ यू? आप देखो, अपना एटलास लेके देखिए. ऑनसेट ऑफ मानसून आई टोल्ड यू द हाउ द मानसून मूव, देन step by step how it is like it moves. That's what I told you. Let me now move on to the third condition. थर्ड फेज था ना. पहला था साउथ वेस्ट मानसून. फर्स्ट इज प्री मानसून डिस्टर्बेंसेस, सेकेंड इज द समर, एंड द थर्ड वन इज क्या था वो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द थिंग्स आई डिड सेड इन द थर्ड केस? व्हाट आई सेड? सीजन वाइज बोला था क्या? जस्ट चेक इट आउट. फर्स्ट आई सेड समर सीजन और प्री मानसून, देन रेनी, देन यू हैव ऑटम बोला था शायद, और व्हाट? ऑटम सीजन. ऑटम सीजन है ना. सो आई विल गो फॉर थर्ड एज रिट्रेटिंग मानसून एंड the northeast monsoon. Retreating monsoon. By 15th of July, I said the entire India is covered with the rainfall. This is what I told you. पूरा इंडिया 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है. That's what I told you. 1 जून से 15 जुलाई. The rainfall will be there continuous further for again nearly 1 month. अगस्त 15 अगस्त हो गया. बाय सितंबर लास्ट वीक इट गॉट कंप्लीटली सेचुरेटेड. पूरे रीजन जो ना इंडिया में बारिश ज़्यादा होता है. एंड यू सी दैट द सन मूव साउथवर्ड मच बिफोर दैट. जून के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर, बाय सितंबर थर्ड वीक एज यू नो सन विल बी देयर. Retreating monsoon, retreat. Okay, that's what. So you can note down here. The southwest monsoon completely covered the Indian mainland by 15th July. Rainfall continues up to August last.
more or less, and rainfall will be there up to August last week of the August. Now what happened here? The southwest monsoon completely covered the Indian mainland by 15th July. Rainfall continued up to August last, and the air gets saturated, completely saturated. एयर जो है वहां का completely saturated हो जाता है. Finally, the air gets completely saturated. ये जो रिटर्निंग मानसून में ये हो गया, देन व्हाट विल हैपन? एट द सेम टाइम the sun, the apparent movement of the sun takes place towards south, June to September, you know, and in September by 23rd होता है ना September, it crosses the equator. So the ITCZ also shift gradually and establish itself towards साउथ. ITCZ भी शिफ्ट कर जाएंगे. Consequently, what happened? The entire pressure belt shift southward. So the surface wind, so the southwest monsoon start retreating. पीछे पीछे आता लगेगा, रिट्रेट करेगा, पीछे जाएगा. साउथवेस्ट मानसून स्टार्ट रिट्रेटिंग. Retreating of the monsoon starts here. So as I just said, the same way as you have seen earlier, in this case also, what happened here? You can see your atlas or your booklet, you will find out that it started in the month of, as you said, you see here that because of this you will have like the retreat in the monsoon. Monsoon का जो retreat है, this is here is, if I'll say, it will be different. In this case, we have the retreat start from here. First of September by 15th of December, it completely okay. So 15th of December, 1st September, 10th of November, here it is,
15th of December. आप देखो gradually it move in this way. So ये जो आपका whatever we have like southwest monsoon, from here it shift up to here, up to here, up to here. Gradually it shift, gradually it move, retreat करता है. You got it what I am saying? Retreating का मतलब क्या है? First it was up to here. पहले ये यहां तक था, पहले ये यहां तक था. अब ग्रेजुअली क्या हो गया? अब उसके बाद यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ, फिर यहां तक हुआ. सो ग्रेजुअली रिट्रेट कर रहा है. इट इज रिट्रेटिंग. Gradually it is retreating. And after, because of this retreat in the monsoon, they are retreating. Retreating phenomena में देखिए retreat 1st September यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक. Gradually it is going back. And with this, consequently what happened? Gradually, with this, winter is approaching. This side you have the Himalayan region become cold, and the northeast monsoon starts here. Northeast monsoon start here. Okay. In the autumn season, northeast monsoon generally start from October to December. We'll have the northeast monsoon. So as I just said, retreat in the monsoon starts with this. Retreat in the monsoon, that the retreating monsoon starts after this subsequent establishment of what is that? Southwest monsoon takes place. आप retreating के बाद धीरे धीरे with the retreat there is establishment of southwest monsoon. तो आप यहाँ पे ये जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो था ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, फिर पूरे रीजन्स पे ये तो नहीं होगा ऐसे, मतलब this is wrong exactly if I'll go for this because it will never come in this way. So आपका जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ऐसे आते हैं ये. This will be because of this, this side you have the cold condition here, this side you have more what you call, this side high pressure condition develops. So wind blow in this way. So while it is coming in this way, it will turn towards right here. Okay. Gradually. After this, while it moved away, it will have this type of development here. Gradually. ये पूरे जब चला जाएंगे, when this is completely got, retreated, then the northeast monsoon develops. Okay. So please note down here on this. I hope you got the phenomena. कैसे होता है तो ये तो समझ में आया ना, how it is. So please note down now. Let us note it down. In one point I can write down here that retreat of the southwest monsoon started by 1st September and completely retreat from the Indian mainland by, कब तक ये कंप्लीटेड कब होगा? 1 अक्टूबर में स्टार्ट होता है. कंप्लीटली रिट्रेट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड बाय 15th of December. By 15th of December. So the retreat or withdrawal of monsoon is
gradual and slow, but onset of monsoon is fast or quick. Onset of monsoon is fast or quick. Onset of monsoon is fast or quick, but withdrawal of monsoon takes time, है ना? Right? I hope it is clear to all of you. Done? Okay, clear? यहाँ तक clear है क्या सभी? All of you are clear up to this? Now I'll go for northeast monsoon. Northeast monsoon start in the winter due to establishment of a strong high pressure condition over the Tibetan Plateau. Northeast monsoon start in the winter due to the establishment of a strong high pressure condition over the Tibetan Plateau. Northeast monsoon start in the winter due to the establishment of a strong high pressure over the Tibetan Plateau, and low pressure over the Indian Ocean you can say summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. Now you can relate the things. So wind blows from north to south. Here again I am saying wind blows from north to south. And gets diverted towards right due to the impact of Coriolis effect. And develops the northeast monsoon. It developed the northeast monsoon.
ओके, अभी ये हम एक डायग्राम बना के देखते हैं इसको कैसे होते हैं। मैंने कहा आई होप यू हैव रिटन दिस नाउ, क्लियर? ओके, now we know that if this is, here it is India, equator, here is the equator. This entire region is developed with, I said that this is a high pressure condition here. This is the high pressure condition. And you know that the entire region here you have the low pressure condition. So the wind will blow definitely from the high to low pressure like this. ऐसे आएगी ना, but it will turn towards right. Why? Because of this, they will give rainfall here in these regions. But on the contrary, the wind which is coming from this side, like they are not having any moisture here. So these are dry wind. These are dry wind. They will not give rainfall here. And there is a, here also we have a, what is that? Mountain. Here we have the mountains here. Okay. So it give rainfall to this region only. Northeast monsoon will give rainfall to this area only. This is the Coromandel coast and south central and southern Tamil Nadu. Southern Tamil Nadu. This region you have. ये region जो है ये moist air, and these are, here it is dry air. Dry air will not give rainfall. They become moist and give rainfall here, but here dry air will never give rainfall. ये तो सब dry ही है, ये सब dry ही होंगे. This was also dry, but gradually it became moist when it enters the ocean. Ocean में enter करने के बाद ये moist हो जाते हैं यहाँ से. This will be dry up to here, but उसके बाद जो है ना moist हो जाएंगे. Then it become moist, and this moisture laden air will strike over south Tamil Nadu coast, will have rainfall. So northeastern rainfall is because of this.
in the northeastern monsoon or northeast monsoon, rainfall is due to northeastern monsoon. Rainfall is only in the Coromandel coast of Tamil Nadu. I hope it is clear to you. So retreating monsoon has two, but retreat in the monsoon is there, then you have establishment of northeast monsoon. So northeast monsoon doesn't give rainfall in other part, it gives rainfall only in the, so we can say the northeast monsoon enters the Bay of Bengal, takes moistures and gives a rainfall only to the Tamil Nadu coast, that is Coromandel coast region in the winter. So this is, here is the winter monsoon, northeast monsoon, which is there. Now, as you know, there is possibility of rainfall in the coming couple of days you will have in the Tamil Nadu regions because of this also. Establishment is already there now. They started now. Retreat in the monsoon and subsequently will have. They started. I hope it is clear to you all. Clear? यहाँ तक क्लियर है क्या? All of you are clear with this? Should I go for the next now? Can you give me the feedback, please? Is it okay to all of you? Is it clear? Northeast monsoon is clear or not? ये जो आपका इंडियन ओशियन डाइपोल का और कुछ बताया ना आपने, थोड़ा सा आगे एक टाइम लेके आई विल डू दैट. मुझे अभी बताइए whether you got the northeast monsoon or not. All of you are, I think, listening. Is it clear to all of you? Okay. Now I'll move on to the next topic. Next is, among these you have winter monsoon hai, that is known as western disturbances. Winter season December to February will have. Northeast monsoon air comes from where? Tibetan Plateau or Siberian desert? Vishwajit is asking this. My friends, Siberian desert से जो आता ना cold wind, they got protected by the Himalaya. So Himalaya, no doubt, it influenced the Himalayan region and Tibetan Plateau area, but it is Tibetan Plateau. Consequently, the major source region is Tibetan Plateau. Some of the scientists are saying, okay, it is because of strong Siberian wind. In winter, yes, there is strong Siberian wind. So definitely impact of the Siberian wind is there over the Tibetan Plateau. But the ultimate answer should be Tibetan Plateau. Does northeast monsoon has any significant effect on northeastern part of India? Aditya is asking this. Yes. Yes, it has. It brings cold wave in northeastern part of India.
वेरी ड्राई कोल्ड वेव इट ब्रिंग्स, थंडर कोल्ड आता है, बारिश नहीं होते हैं, बट यस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टाइम में थोड़ा बहुत बारिश आ जाते हैं। सर साइक्लोन डेवलप्स over the Andaman sea gives heavy rainfall, can you throw some light in this? Yes of course। आपको बता दूं जो इंडियन ओशन डाइपोल वाला बात किया था ना, यू रिमेंबर, मैंने कहा वंस देयर इज लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इफ देयर इज वार्मिंग अप इन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इन द अरेबियन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन विल बी मोर। ये है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में। इन नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल मतलब राइट हैंड साइड पे, मतलब इन द बे ऑफ बंगाल साइड, इफ देयर इज मोर टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन बे ऑफ बंगाल विल बी मोर। रिमेंबर इन जनरल अभी का टाइम जैसे है ना, अर्ली पॉइंट ऑफ अर्ली अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक व्हाट हैपन, वार्मिंग अप ऑफ द ओशन, ओशियन का जो ना कॉन्टिनेंट से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, temperature in the ocean is more. So wherever there is 27 degrees Celsius or more temperature, there you have development of cyclone. Okay, so that is a different things that is there with cyclone का होता है। Is Sri Lanka and Andaman Nicobar में northeast monsoon? Yes, yes मसूद, मेरीन क्लाइमेट टाइप इसलिए होता है वहाँ पे। ओके, it means northeast monsoon wind flows over the entire Indian landmass but gives rainfall over Koramulgo. Am I correct? Yes Partha, you are correct here. It flows through the entire Indian mainland, but the problem here, you know, Western Ghat is there, so west coast तक नहीं जाता है, it cannot touches the west coast mostly and they cannot give rainfall. Wind is there, cold wave तो इसीलिए आता है ना, cold wave is there because of this only. In India which are area dominates high pressure condition, most exact location? Sir, in India which area dominates high pressure condition most? High pressure condition देखिए seasonally it differ. If you look at high pressure, देखो Tibetan plateau which became a high pressure, even the northwest India have high pressure. साइबेरियन विंड जब आते हैं उधर से, जैसे बताया आपने, इसे अफगानिस्तान रीजन फ्रॉम विच ऑल्सो कोल्ड विंड कम्स टुवर्ड्स पाकिस्तान, and from there also our northern part, Punjab, Haryana, part of your Rajasthan, this region develop high pressure condition because of very cold wind, very cold and dry wind we have. This is also there. Okay, यही भी होते हैं, right? You must remember that. So exactly बोलेंगे तो near the north central India to हिमालय, दिस एंटायर रीजन्स, एक स्ट्रिप जो लो प्रेशर था वो अब हाई प्रेशर बन जाएंगे। बाय द वे, एज आई जस्ट सेड अबाउट दिस, लेट मी नाउ टेल यू अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टेक्स प्लेस व्हेन, मैंने कहा इन विंटर सीजन, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ, आई हैव ऑलरेडी सेड, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ, क्या है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ which easterlies or which jet stream, westerlies jet stream, due to the impact of westerly jet stream during winter, disturbances, atmospheric disturbances and cyclonic disturbances developed over the Mediterranean Sea region
gradually travels towards किधर जाएगा? Gradually it travel towards from the Mediterranean travel towards east and strike over the Himalayas. It gives moderate to low rainfall. Moderate to low intensity rainfall across the northern India. मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी रेनफॉल अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया कहाँ से कहाँ है ये? जैसे कि आपकी राजस्थान, बिकॉज इट ट्रैवल्स फ्रॉम दैट रीजन, दैट्स वाई. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली रीजन. Remember, in Rajasthan, it is called as Mawat. It is called as Mawat. Locally, it is called as Mawat in Rajasthan. In Rajasthan, it is called as Mawat. M-A-W-A-T, Mawat. It is called as Mawat in Rajasthan. Okay. So, hope you got it now. I just tried to give you some idea about it. देखो याद रखें एक बात, जेट स्ट्रीम आके स्ट्राइक करता है. I told you in the jet stream theory earlier. The height of the jet stream became less in the winter. It strike of the Himalaya, but the moisture is taken up from the surface by these disturbances which travel with the jet stream itself, and they give rainfall here. This is called a western disturbances, because the disturbances is coming from the west. Monsoon in Bay of Bengal and Arabian Sea, which has stronger intensity? If northeast monsoon is dry wind, then why in winter snowfall happens in northern Himalayan part? My friends, continental wind है, comparatively dry है. It is not the driest wind. Moisture is still there. Adequacy of moisture, adequate moisture नहीं है. Okay. Because बारिश हुआ था तो moisture is there, no doubt, but no sufficient moisture that it will have the evaporation and subsequent condensation for rainfall. But yes, there is not completely dry one. Okay. आप ये relative बात है ये. Monsoon in Bay of Bengal and Arabian Sea, which has stronger intensity? It depends on what type of which year. I mean, El Nino year है, La Nina year है या normal है. In normal case, if you will see, generally the monsoon, if you look at this, okay, it is stronger. If you look at this, both branches are different in fact based on the orographic case. But हम देखेंगे अगर coverage area and all this, heaviest rainfall is given by the Bay of Bengal. Okay, but area coverage is very huge in case of the Arabian Sea.
in India if you look at. Okay. So, agar intensity, it is a very, the question which you have asked me, like, how much in this, it depends yearly. But many a times we have seen that Arabian Sea is stronger than the Bay of Bengal. Arabian Sea branch is much stronger than the Bay of Bengal. Okay. But you see, we have heaviest rainfall in from the Bay of Bengal branch in the regions which is called as Masindram or Cherrapunji. Does Andaman Nicobar get rainfall from the? Yes, yes. It gets more rainfall from northeast monsoon. Sorry, southwest monsoon. Northeast monsoon also होता है वहाँ पे. See, this region मेरीन क्लाइमेट टाइप हो जाता है यहाँ पे. 8 मंथ तक बारिश होता है इन अंडमान निकोबार. ओके. थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट ऑन दिस एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने. कीप इट अप. थैंक यू. सो लेट अस लाइक ये जैसे मैंने कहा कि मावत बोलते हैं इसको. दिस इज समथिंग अबाउट द मानसून. मानसून के ऊपर कुछ बोला. देखिए आप एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चंस का आंसर लिखना आप. गिव एन अकाउंट ऑन द mechanism of Indian monsoon. Indian monsoon. 15 marks, 250 words. ये लिखो ये. Discuss the role of jet stream on the mechanism of the Indian monsoon. Discuss the role of jet stream on the mechanism of Indian monsoon. This is 10 mark, 150 words. What is western disturbances? Western disturbances. How it affect the weather condition of northern India. 10 marks, 150 words. Do write these question answers. Okay, I got a lot of SMS in between, questions in between from my friends, all of you asking me, sir, do we need to study the NCERT book? My friend, yes, you have to study. Nothing can replace these books. These are very basic, fundamental things. Always I suggest all my students, like, do study. This is your basic चीज है ये. Again we are saying, like, sir, नोट बनाए क्या? अरे नोट क्या बनाएगा? You don't have to go for that. Study it properly, line by line, sentence by sentence. Try to find out meaning of everything. This is your reference, basic things. उससे आगे जाना है. This is the foundation, basic. Prepare the sticky note लेके आप लगा के उस पे के ऊपर ही बनाओ. Do this. Each and every page you have to study. This is very good book.
So जो पूछे हैं, let me answer this, that yes, you have to study. And another, is it enough for us? No, I am not saying it is enough for you, because this is for the basic things. But yes, you have to add something on this. You have to add some more information on it. But उसके बिना नहीं होगा आपका. This is the basic foundation. Without knowing that, how can you say other things? It is not enough, but it is essential for you. Got it what I am saying? To an honest advice, I can say only one thing: you cannot leave that. You have to study. Okay? So don't worry. Go ahead with this more and more, preparation. आप बार बार लिखिए, पढ़िए उसको, क्वेश्चन का आंसर लिखो. You will get to know. Practice every day at least some questions, whatever available in the market or somewhere, Take this question, objective type question, do it. Start doing. हम जो दे रहे हैं ठीक है, उसके अलावा भी कुछ करो. Do something more. Sir, where vegetation is more, monsoon intensity is much, like the northeastern Rajasthan. Monsoon rainfall intensity decreases. Yes. Rainfall happens in Bay of Bengal heaviest. मुझे proof दिखाओ. It is because of, you are talking about strength of the monsoon. You didn't say about, भाई साहब, क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? Because of the presence of Garo, Khasi and Jaintia hinil funnel shaped, that trapping of this is there and more rainfall is there. एक तो record है. I am talking about the entire area. सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, सर क्या कर रहे हैं? देखिए, यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू डू. दिस इज वन अमंग द टफेस्ट एग्जाम, बिलीव मी. बट वंस यू प्रिपेयर, दुनिया में ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जो नहीं होगा आपसे, बिलीव मी. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू, एंड it is very inspiring that state government of West Bengal has taken such a bold initiative, such an apt initiative, such an important decision for the youth mass like you all. Great thing, great job by the government. Really, it's appreciable. Nobody, no other state has this type of initiative. लोग लिया है मगर ऐसे नहीं है. इतना बढ़िया आपका मन. I really salute, I really appreciate this. Please make this program successful, my dear. Do study. Time management का है? Time तो सभी के लिए 24 hours. You need to study. Stick up to your study table. Give your best efforts. Köppen's classification I'll discuss now. Okay. In winter, sometimes northern part of West Bengal gets rainfall of low intensity. Yes. What is the cause? Is it due to the western disturbance or due to other? See, rainfall in this region, देखो जो होते हैं ना, वह बंगाल में भी होता है. ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर पूरे एरिया में रहता है. अप टू, in fact it goes up to even Tarai regions and all also they get rainfall. But sometimes local conditions also responsible. ये क्लाउडी रहता है, थोड़ा बहुत. तो साइक्लोन जब आते हैं तभी होते हैं, डिप्रेशन होके कभी कभी बारिश आ जाता है समटाइम्स. ओके, दैट्स इज देयर. अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट और रहेगा भाई, अभी तो बहुत ही कम टाइम है. विल कंप्लीट द सेशंस वेरी सून ऑफ माय एरिया. डू प्रैक्टिस. क्वेश्चन का आंसर का प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए आपको. यू नीड टू रेगुलरली डू द थिंग्स, रेगुलरली गो फॉर दिस. And if you practice more and more, it will be giving more confidence to you. Keep it up, that particular thing. Let us now move on to rainfall pattern पे चलते हैं. How is the rainfall pattern in India? कैसा है rainfall pattern and how, where you will have what type of rainfall? As you are talking about the, sir, मुझे बताइए, Köppen's classification बोल रहे हैं आप. So I got this question even. My friends, if I'll go for the अच्छा, एक काम करिए आप. कैन यू, डू यू हैव द एनसीईआरटी बुक? इफ इट इज देयर, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन द एनसीईआरटी, दैट मैप, कैन यू सी दैट? You can see the
rainfall distribution map in NCERT which is given, or we can have the distributional plot. कैसा रहेगा बताओ तो rainfall how it will be? Rainfall distribution will be different in different part, no doubt. So distribution of rainfall annual करो, annual distribution of rainfall in India. In India, there is annual distribution of rainfall, no doubt. Rainfall of India distribution, if you look at, do you know the annual average rainfall of India? Annual average rainfall of India is around 125 सेंटीमीटर, 120 to 125 cm के अराउंड रहता है, but it has greatest regional variability. Regional variability is very high, very greatest regional variability it has. It has greatest regional variability. Okay. Remember, the southwest monsoon is responsible for nearly 75% of total rainfall in India. Annual rainfall, but it has greatest regional as well as temporal variability, TMPORAL, temporal variability. मतलब टाइम के साथ साथ वेरिएशन भी है और जगह के साथ साथ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड टाइम देयर इज वेरिएशन, ग्रेट वेरिएशन. Annual average rainfall of India is around 125 cm, but it has greatest regional as well as temporal variability. मतलब location wise भी different है. Location wise if you see this is different. Time wise also it is different. Completely different है ये. तो क्यों है, कैसे है? Let us see now how and why it is. अच्छा ये जेट स्ट्रीम आया, ओके, और एल निनो विल सी अगेन, ओके, लेटर ऑन विल सी. प्लीज डिस्कस समथिंग ऑन द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया. यस, विल आई डिस्कस दैट, अभी डिस्कस करूंगा उसको. एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अराउंड 125 cm, बट इट हैज ग्रेटेस्ट रीजनल एज वेल एज टेम्पोरल वेरिएबिलिटी. रीजनल एज वेल एज टेम्पोरल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है. देखते हैं कब होता है. लिखो, द साउथ वेस्ट मानसून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, साउथ वेस्ट मानसून गिव्स 75% of India's rainfall. 75% of India's total rainfall, southwest monsoon gives this. And the northeast monsoon only 13%, October to December, northeast monsoon
13%. October to December. Southwest monsoon, we have like June, July, August, September. June to September. नॉर्थ ईस्ट मानसून तो 85% हो गया, नहीं 13 तो हो गया, क्या 88%. 88%. प्री मानसून डिस्टर्बेंसेस 10%. Western disturbances 2. Pre-monsoon shower 10%, and western disturbances 2%. So pre-monsoon shower मैंने कहा कि समर सीजन है, अप्रैल to May, this is like this. And you know that January to February, March, we have western disturbances. January to February, generally February March हो जाएगा, western disturbances you have. दिसंबर फरवरी बोलो जनवरी, ये दिसंबर हो रहा है ना, दिसंबर टू फरवरी होगा मेनली, दिसंबर टू फरवरी, मार्च तक तो नहीं होता है. दिस टाइम यू हैव मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 2%. टोटल 100% यू हैव. ओके, ओके. साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, प्री मानसून शावर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. आप ये है टेम्पोरल वेरिएशन आई हैव जस्ट सेड. With respect to time, how it has variation is there. Rainfall variability कैसे हुआ समय के साथ साथ it is given. Okay, I hope it is clear to all of you. राइट, अभी देखते हैं रीजनली कैसे वेरिएशंस है इसकी. इफ यू लुक एट योर एटलस, कैन यू फाइंड आउट इन द एटलस, फाइंड आउट हियर विच रीजन यू हैव. वी कैन डिवाइड द एंटायर रेनफॉल ऑफ इंडिया इनटू एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, एरिया स्कैंटी रेनफॉल रीजन्स. कैन यू सी दैट? अपना एटलस में है एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, एरिया ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एटसेट्रा. You can see that. In fact, I request you all to have a glance over these regions. आप थोड़ा देख लीजिए. ये मैप में देखिए, ब्रेक दे रहा हूँ अभी. आफ्टर दिस थोड़ा जल्दी ब्रेक हुआ ना आज. हाँ, knowingly I am giving you. After this we will have the Köppen's classification ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. कोपेंस क्लासिफिकेशन कराएंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मैप में आपको दिखना है. प्लीज डू सी योर एटलस
and your NCERT book and these maps we need to see. Okay, please find out that. So see you then after the lunch break. Thank you.